Red Fort blast has happened, and after that we have seen a kind of a white collar terrorism for the first time, sir. The white collar terror in Kashmir and in other parts of the world has always been there. Sleeper cells have always been there, who at the face of it, वो लगते हैं कि बहुत शरीफ आदमी हैं, डॉक्टर हैं, अच्छी फैमिली से हैं, पढ़े लिखे हैं, और वो एक तरह से दे आर टिकिंग टाइम बॉम्ब। ये जो मॉड्यूल फरीदाबाद में और दिल्ली जो रेड फोर्ट ब्लास्ट है, इस पूरे मॉड्यूल के ऊपर जैश मोहम्मद का सिग्नेचर स्टैंप है। जो पुलवामा का आईडी ब्लास्ट हुआ था 14 फरवरी 2019 को, जिसमें हमारे 40 सीआरपीएफ के जवान वीर गति को प्राप्त हुए थे, उसमें भी जो कार बम का इस्तेमाल हुआ था, वो कार 7 से 8 हैंड्स एक्सचेंज कर चुकी थी। और ये जो व्हाइट कॉलर टेरर जिसके ऊपर आपने बात की, ये अभी आगे आगे ज्यादा होगा, क्योंकि जो स्टीरियोटाइप्स हैं, स्टीरियोटाइप लुक्स हैं, स्टीरियोटाइप नेम्स हैं, स्टीरियोटाइप बैकग्राउंड्स हैं, वो अभी पुलिस और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के स्कैनर के नीचे। सोसाइटी के उस हिस्से को अभी टारगेट किया जा रहा है टेररिज्म में एनरोल करने के लिए, जिसके ऊपर आम करके शक नहीं होता। और डॉक्टर का प्रोफेशन तो इतना नोबल प्रोफेशन है कि जान बचाने वाला प्रोफेशन है, और उनको रिक्रूट करके उनसे इनोसेंट लोगों की जान लेना हैवानियत का काम है। So do you see this attack as a revenge of Operation Sindhu? तो जैश मोहम्मद पाकिस्तान डीप स्टेट का एसेट है, और ये जो टेरर ब्लास्ट हुए, जो टेरर रिकवरीज हुई हैं, ये पूरी तरह से जैश मोहम्मद और टेरर पाकिस्तान सपोर्टेड है। अभी इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं, एंड आई एम वेरी श्योर प्रूफ के साथ हमारी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA प्रूफ के साथ इस बात को प्रूव करेंगे। How do India deal with this new kind of terrorism? Our counter-terror strategy is very clear, and India's reaction would come at the time and place of its own choosing. वक्त और समय और जगह वो हम डिसाइड करेंगे कि हमने इसको किस तरह से रिएक्ट करना है। Today we have with us a very special guest, Lieutenant General retired Mr. Dhillon, and he will be talking to us about the Red Fort blast and connecting incidents and events which are taking place. Thank you, sir, for sparing time. My first question to you, sir, is that this Red Fort blast has happened, and after that we have seen a kind of a white collar terrorism for the first time, sir. Not for the first time, we have seen involvement of intellectuals earlier, but that was indirect. But this time it's looking like a more direct involvement of white collar terrorists. Sir, you have dealt with terrorism very, very closely when you were serving in army and especially in Kashmir. Sir, how do you look at this sequence of events, sir? मिस्टर नवीन, नमस्कार और जय हिंद, और आपके व्यूअर्स को भी जय हिंद। See, the white collar terror in Kashmir and in other parts of the world has always been there. Sleeper cells have always been there, who at the face of it, वो लगते हैं कि बहुत शरीफ आदमी हैं, डॉक्टर हैं, अच्छी फैमिली से हैं, पढ़े लिखे हैं, और वो एक तरह से दे आर टिकिंग टाइम बॉम्ब। और ये जो मॉड्यूल फरीदाबाद में और दिल्ली जो रेड फोर्ट ब्लास्ट है, इस पूरे मॉड्यूल के ऊपर जैश मोहम्मद का सिग्नेचर स्टैंप है। अगर आप आपके दर्शकों के एक बार रिफ्रेश करने के लिए, जो पुलवामा का आईडी ब्लास्ट हुआ था 14 फरवरी 2019 को, जिसमें हमारे 40 सीआरपीएफ के जवान वीर गति को प्राप्त हुए थे, उसमें भी जो कार बम का इस्तेमाल हुआ था, वो कार 7 से 8 हैंड्स एक्सचेंज कर चुकी थी। पुरानी कार थी, उसमें भी एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल हुआ, उसमें भी सुसाइड बॉम्बर का इस्तेमाल हुआ, उसमें भी सुसाइड बॉम्बर ने पहले अपना एक वीडियो बनाया जिसमें वो जस्टिफाई कर रहा है कि वो क्यों सुसाइड कर रहा है, क्योंकि कोई भी रिलीजन, नो रिलीजन जस्टिफाइज सेल्फ डिस्ट्रक्शन एंड किलिंग ऑफ इनोसेंट सिविलियंस इन कोल्ड ब्लडेड मर्डर। और उस बात को जस्टिफाई करने के लिए एक तर्क दिया गया या एक जस्टिफिकेशन, तो ये बहुत सिमिलैरिटीज थी। और ये जो व्हाइट कॉलर टेरर जिसके ऊपर आपने बात की, ये अभी आगे आगे ज्यादा होगा, क्योंकि जो स्टीरियोटाइप्स हैं, स्टीरियोटाइप लुक्स हैं, स्टीरियोटाइप नेम्स हैं, स्टीरियोटाइप बैकग्राउंड्स हैं, वो अभी पुलिस और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के स्कैनर के नीचे हैं। तो इसलिए उस जो स्कैनर है या जो पुलिस और एजेंसीज की जो नजर है, उससे बचने के लिए सोसाइटी के उस हिस्से को अभी
टारगेट किया जा रहा है टेररिज्म में एनरोल करने के लिए, जिसके ऊपर आम करके शक नहीं होता। और डॉक्टर का प्रोफेशन तो इतना नोबल प्रोफेशन है कि जान बचाने वाला प्रोफेशन है, और उनको रिक्रूट करके उनसे इनोसेंट लोगों की जान लेना हैवानियत का काम है ये। सो दिस इज अ मॉड्यूल ऑफ जैश ए मोहम्मद। वर्ल्ड ओवर हमास में और बाकी जगहों पे व्हाइट कॉलर टेरर वाज ऑलवेज देयर। इंडिया में भी इट वाज देयर एज स्लीपर सेल्स, लेकिन प्रोबेबली इंडल्जेंस इन टेररिस्ट एक्ट ये शायद हम पहली बार देख रहे हैं। Sir, in your opening answer, you said that this has signature of Jaish-e-Mohammed. And we know Jaish-e-Mohammed has somewhere the backing of Pakistani state agency, the ISI. So there are direct links. In fact, one of the leaders, a former Prime Minister of Pakistan occupied Kashmir, Mr. Anwarul Haq, said that from Red Fort to terror to forest of Kashmir, we are going to hit India. So do you see this attack as a revenge of Operation Sindoor? देखिए, पाकिस्तान की जो डीप स्टेट है या पाकिस्तान की जो स्टेट है, पाकिस्तान में पॉलिटिशियन, मिलिट्री, आईएसआई, इंटेलिजेंस, आर्मी, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। इन सब का एक ही एजेंडा है कि इंडिया में किसी तरह से हलचल फैला के रखना, इंडिया में टेररिज्म फैला के रखना। तो जो अभी आपने नाम लिया पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर का, 3-4 दिन पहले वो प्राइम मिनिस्टर हटे हैं, उनका जो बयान था और असेंबली में बयान है ये, और उसको डायरेक्टली लिंक कर रहा है कि पाकिस्तान वाज वेरी मच इन्वॉल्व्ड इन व्हाट हैपेंड इन दिल्ली रेड फोर्ट ब्लास्ट। तो पाकिस्तान की डीप स्टेट और जैश ए मोहम्मद एक है। जैश ए मोहम्मद जो है पाकिस्तान डीप स्टेट का ही प्रोडक्शन है। उसको सपोर्ट ही नहीं, वो पूरा उसको ट्रेनिंग, फैसिलिटीज, सपोर्टिंग, हाउसिंग, फंडिंग, और फिर टेररिस्ट को इन्फिल्ट्रेट करना इंडिया के अंदर, पाकिस्तान आर्मी की पोस्ट के थ्रू, लाइन ऑफ कंट्रोल, या किसी थर्ड कंट्री के थ्रू। तो जैश ए मोहम्मद पाकिस्तान डीप स्टेट का एसेट है। और ये जो टेरर ब्लास्ट हुए, जो टेरर रिकवरीज हुई हैं, ये पूरी तरह से जैश ए मोहम्मद और टेरर पाकिस्तान सपोर्टेड है। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही हैं, एंड आई एम वेरी श्योर प्रूफ के साथ हमारी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए प्रूफ के साथ इस बात को प्रूव करेंगे। So how should India react to this? Like you have written a very fabulous book, and I am already almost finished that book, reading that Operation Sindoor. How do India deal with this new kind of terrorism? And if you say, do you think they have penetrated very deep already? तो इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद में बहुत क्लियर अपनी काउंटर टेरर स्ट्रेटेजी डिक्लेयर की थी। एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी सीन एज एक्ट ऑफ वॉर। और जो टेरर कमिट कर रहे हैं, वो टेररिस्ट या उनके सपोर्टर्स या उनको सपोर्ट करने वाला देश, इनमें हम कोई अंतर नहीं मानेंगे। हमारे लिए वो सब टेररिस्ट हैं। सो आवर काउंटर टेरर स्ट्रेटेजी इज वेरी क्लियर, एंड इंडियाज रिएक्शन would come at the time and place of its own choosing. वक्त और समय और जगह वो हम डिसाइड करेंगे कि हमने इसको किस तरह से रिएक्ट करना है। आज का इंडिया इज नॉट इंडिया ऑफ यस्टरडे। हमारा कल वाला हिंदुस्तान नहीं है। इट्स अ न्यू इंडिया। इट्स अ 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी। इट इज द 6th लार्जेस्ट इन ह्यूमन रिसोर्स। वी आर द 1/6 ऑफ द वर्ल्ड। वी आर द माइटी मिलिट्री। और ऑपरेशन सिंदूर में हमने दिखा दिया कि कैसे 4 दिन के अंदर एक न्यूक्लियर पावर घुटनों के बल आकर के शांति या सीजफायर की भीख मांगती है। वो हमारी सेनाओं ने, हमारे डिप्लोमेसी ने, हमारी पॉलिटिकल विल ने, हमारे पूरे देशवासियों ने मिल करके जो जज्बा था वो प्रूव कर दिया है। सो आवर काउंटर टेरर स्ट्रेटेजी इज वेरी क्लियर। एनी एक्ट ऑफ टेरर अगेंस्ट इंडियन स्टेट, इंडियन मिलिट्री, इंडियन सिटीजन इज एन एक्ट ऑफ वॉर, and there is no differentiation between a terrorist supporter, and a government supporting the terrorism in India. So you cannot rule out Operation Sindoor 2.0. Absolutely, it can take any shape, it can be in any kind, it can be at any time, it can be at any place. Our reaction, our action, our retaliation is a subject of our choosing. So call it by any name, but we will hold all the cards and we will react at the time and place of our choosing. Sir, as you said that stereotypes are already under scanner of our agencies. Now, my earlier question was also to you, how will India tackle this? Because, you will not even know now that who are terrorists. They are very much part and parcel of society. They are in white collar jobs.
Even journalists, recent some of the locations of some big publications in Kashmir came under scanner. So how to deal with it? मैं इस क्वेश्चन का आंसर दो हिस्सों में दूंगा. फर्स्ट इज द फर्स्ट पार्ट, हाउ शुड इंडिया डील विद इट. Even in case of a war, nations go to war, militaries only fight on the border. And in counter-terrorist operations, it is the nations which will counter the terror. Militaries or security agencies or intelligence agencies only fight on the field. Every citizen is a soldier, not in uniform. We as nation, we as citizens, we have to be very alert what's happening around us. हमारी खुद की सेफ्टी, हमारे परिवार की सेफ्टी, हमारे मोहल्ले की सेफ्टी और हमारे देश का सुरक्षा, ये हमारे हाथों में है, हर एक सिटीजन के हाथों में, हर नागरिक के हाथों में. सो वी मस्ट बी वेरी अलर्ट. टेकिंग एग्जांपल ऑफ दिस पर्टिकुलर इंसिडेंट, ना फरीदाबाद में किसी ने अपना घर या मकान किराए पे दिया है, उस मकान में टेररिस्ट लाके एक्सप्लोजिव्स डंप कर रहे हैं. अभी जो सामने आ रही है बात की, शायद वो मालिक मकान भी शामिल था जब औरत थी वो. लेकिन अगर आपका कोई प्रॉपर्टी आपने रेंट पे दी है और आप उसके बारे में बाद में भूल गए हो कि हाँ ठीक है किराया आ रहा है, और ऐसे जो टेरर मॉड्यूल्स होते हैं वो किराया भी आपको ज्यादा देंगे. Right. अगर मार्केट रेट 10,000 है तो आपको शायद वो 15,000 देंगे, ताकि आप एकदम से उनको वो अपनी प्रॉपर्टी किराए पे दे दीजिए. और अगर आपको ये नहीं मालूम कि आपकी प्रॉपर्टी या आपका मकान किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है, फिर गलती आपकी है. अभी इसी को एग्जाम्पल लीजिए, कोई आ रहा है आपके कमरे में बॉक्सेस डंप कर रहा है, फिर 1 महीने तक नहीं आ रहा, फिर 2 महीने बाद फिर आता है, फिर 2 बक्से डंप करके चले जाता है. अगर कोई दुकानदार वेयर हाउस की तरह यूज कर रहा है, तो सुबह आएगा 4 बक्से डंप करके जाएगा, दोपहर को उसका लड़का आएगा 3 आइटम निकाल के ले जाएगा, शाम को फिर नया माल आ जाएगा अगले दिन. तो हर रोज वो अपने इस्तेमाल हो रहा है, वो आपको पता है कि उसकी दुकान वहां पे है, ये उसका दुकान का मालिक है. इस तरह से जब भी आप प्रॉपर्टी किराए पे देते हो, दो चीज बहुत जरूरी है. पहले आप उसकी वेरिफिकेशन पुलिस से करवाइए. आपके आसपास में इलाके में कोई भी शकिया हरकत है, शकिया इंसान है, उसकी इंफॉर्मेशन पुलिस को दीजिए. और दूसरा, आप समय समय पे अपनी प्रॉपर्टी को चेक करते रहिए वो किस काम के लिए इस्तेमाल हो रही है. और इसके अलावा एज एन अलर्ट सिटीजन, सस्पेक्ट एवरीवन, रिस्पेक्ट एवरीवन. ये बहुत जरूरी है कि आप हर एक की इज्जत कीजिए, लेकिन हर एक को शक की नजर से भी देखिए अगर वो कोई शकिया कार्रवाई में is involved. And now coming to the second part, which you said that some media houses are also being searched, which are linked to terrorism in Kashmir. देखिए कश्मीर में ना एक इकोसिस्टम काम कर रहा था. 2019 से पहले, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 से पहले, टेररिज्म जो था ना, टेररिज्म वाज एन इंडस्ट्री, और उस इंडस्ट्री से पूरा इकोसिस्टम वाज बेनिफिटिंग. That ecosystem involved Pakistan's deep state, it involved Pakistan Army, it involved Pakistan ISI, it involved terrorist organization, it involved Hurriyat, it involved overground workers, it involved active terrorists in Kashmir, it involved certain vernacular journalists and press, it involved certain local politicians, it involved certain white-collared opinion makers. All these people were benefiting from the terrorism in one form or the other. And coming to the specifics of what incident you are saying, where certain media houses being raided, the media, especially the vernacular media, was always very polite and soft towards the terrorism and the terror sympathizers. So it's a good thing the government is taking action. We must weed out this cancer of society. We must weed out this black sheep of society. Media is a very, very professional, very ethical profession. If someone is indulging in anti-national activities and is supportive of terrorists, I think there is no space for such people in a respected profession like journalism and media. सर मेरा एक सवाल और है, बड़ा सवाल ये है कि डिस्पाइट ऑल द अलर्टनेस, डिस्पाइट ऑल द न्यू टेक्नोलॉजी विच इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज आर यूजिंग, Pakistan is successfully still recruiting people from across the border. How is this happening? And this is a very serious concern because communication is taking place, in third countries. So I think it's a very complicated situation, what I can see. नवीन जी, जो ना आम करके लोग बात करते हैं रेडिकलाइजेशन, रेडिकलाइजेशन इस तरह के व्हाइट कॉलर रिक्रूटमेंट के लिए एक हिस्सा है.
फाइनेंसेस इज द मेन ल्योर। और अगर भी आप अल्फला यूनिवर्सिटी को देख लीजिए, उनकी फंडिंग को देख लीजिए, वो करोड़ों रुपए जो आ रहे हैं वो कहां से आ रहे हैं? Where is that money coming from? And that money is being utilized to radicalize, as also give incentives to people to enroll in these modules. तो सर इसके बारे आपने में कोई बात नहीं करता है. It's very easy and simple to speak about radicalization, but राइट main source of recruitment has to be funding because economics drives everything. बट सर आपने अपना कश्मीर में ज़रूर डील किया है इन चीज़ों से, तो कम्युनिकेशन चैनल्स कैसे ऑन रहते हैं सर? मतलब लाइक व्हाई इट कांट बी इंटरसेप्टेड थ्रू टेक्नोलॉजी और थ्रू ह्यूमन इंट? व्हाई वी आर फॉल्टरिंग इन दीज थिंग्स? See, इसमें whole of government approach is a must. What happens is, moment they communicate on open mobile phones or thing, they will get intercepted. What they're using is they're using certain apps on the internet, voice on internet protocol, VoIP, and those apps cannot be intercepted, or those apps are not, the legal agencies cannot ask for the transcripts. In my opinion, the government should be very harsh with the people who are producing those apps or the owners of those apps. If you want to do business in India, like I said earlier, we are 1/6 of the world. They need us. They want us to, use those apps. If those companies want their apps to be effective in India or being used by Indian citizens, Indian government must have the handle to ask for any details of any person using that app for whatsoever reason. But then privacy clauses will come, no? If they do not agree, if they do not oblige, we should ban those apps like we banned certain Chinese apps. I think nation comes first. Whatever benefits, economic or otherwise, these apps are giving, I think those are all secondary or tertiary or not at all on the table as relevant items. The nation comes first, national security comes first, safety of our citizens comes first, and dignity of the nation comes first. We cannot be seen as a soft target for any terrorist organization. And government has to take very harsh decisions on that. Sir, as you said, that suspect and respect. So there are some cases of now, profiling. Like you must have also dealt with the same situation. Like in fact, some of the top politicians, like Mr. Omar Abdullah, has said that I think twice before taking out car because now every Kashmiri is suspected. So that is also not right. What do you say about that? See, I do not comment on the politicians or political statements. But what I am trying to say is, if you see anyone indulging in a suspicious activity, Right. you should be alert. And when you are alert, you should suspect. When you suspect, you should always respect till he is proven to be indulging in anti-national activities. So suspect all, respect all is a concept of a human behavior. When I say suspect all, I mean you must be alert what's happening in your surrounding. And when I say respect, that means don't go and start bashing up people or start insulting people. You should be very human, you should be very civil, you should be absolutely appropriate in your behavior. And it's only for the suspicious activities, not for routine activities. And it is a responsibility of every citizen to be alert about its environment. And in case you observe anything suspicious, report to the security agencies. बाकी पॉलिटिशियन बातें करते रहेंगे, आई डोंट केयर मच अबाउट इट. सर मेरा अगला सवाल आपसे है कि कश्मीर में भी आपने इस तरह की सर सिचुएशन से डील किया होगा जबकि पढ़े लिखे लोग उसमें इन्वॉल्व थे, उसको आपने कैसे हैंडल किया और कैसे उसको न्यूट्रलाइज किया सिचुएशन को? इसके ना दो पहलू रहते हैं. एक तो है कि यू आर इन्वॉल्व इन एंटी नेशनल एक्टिविटीज. आप चाहे पढ़े लिखे हो चाहे पढ़े लिखे नहीं हो, आप किसी अच्छे खानदान से बिलोंग करते हो या किसी नॉर्मल खानदान से बिलोंग करते हो, आप कोई अच्छी नौकरी कर रहे हो या कोई नॉर्मल अपना बिजनेस कर रहे हो, इट डज नॉट मैटर. If you are dealing or indulging in anti-national activities, you will be taken by the law. The law will take its course, and there is no double standards in that कि आप पढ़े लिखे हो या पढ़े लिखे नहीं हो. Law is same for all. Second is, जो पढ़ा लिखा ना उसकी एक एक्सेप्टेबिलिटी है सोसाइटी में. एक लेजिटिमेसी है कि यार डॉक्टर है, अच्छा आदमी है, शरीफ आदमी है, अच्छा प्रोफेशन है. सो जो मैं बात कर रहा था सस्पेक्ट ऑल रिस्पेक्ट ऑल, वो जो सस्पेक्ट ऑल वाला पार्ट है ना उसमें,
वो काफी नीचे रहता है, और रिस्पेक्ट ऑल वाला पार्ट जो है ऐसे प्रोफेशन के लिए काफी हाई रहता है. So as a result, these people are able to carry out their nefarious activities without being suspected and always respected. So इसलिए मेरा जो कहना है कि suspect all irrespective of his background, his status, his or her, and respect all irrespective of whatever, unless you are very sure that he or she is indulging in anti-national activities. So it's must, because as a security agency, you cannot differentiate based on the caste, creed, religion, as they say. It has to be the activities of the individual which would decide how he or she has to be dealt. Sir, India is also now facing another challenge from the eastern side. Like we have seen, yesterday we did an interview with Ms. Sheikh Hasina's son. He said that Lashkar-e-Taiba and all are having a free run right now in Bangladesh. Can that also be a challenge? And there can be also a possible Dhaka link to this. The investigations are going on, so we should not, jump the gun. But I spoke to a couple of people who are involved in the investigation. So Dhaka link is not ruled out as well. So do you think that it's a big challenge now for India now from the eastern side as well? Mr. Naveen, before Ms. Sheikh Hasina came to power in Bangladesh, Bangladesh was hotbed of ISI activities. Yes. All the terrorist organizations operating in Northeast, starting from Manipur to Nagaland to Assam, they all had their bases in Bangladesh and Myanmar. So sanctuaries in Bangladesh were very much a part of the operations when ISI was active before Sheikh Hasina came to power. When Sheikh Hasina came to power, she dealt with that aspects very, very firmly. She also dealt with the Jamaitis who were involved in 1971 supporting Pakistani army against local Bengalis. And that was not acceptable to ISI and deep state of Pakistan. And that is the reason she has been ousted. And that is the reason now a death sentence has been issued against her, because the ISI wants Bangladesh area to be used for anti-national activities against India. And in military parlance, they want to open another front from the Bangladeshi side. You talked about eastern side. So yes, it's a reality. ISI is very active in Bangladesh, and today's Bangladesh government has got no legal or legitimate standing. They are a nominated, caretaker government. And now they indulging in long-term policy decisions on international level, at international level. I don't think it will stand for very long. But yes, what's happening in Bangladesh, may it be from the terror organizations against India, or may it be against the minorities in Bangladesh. Those are matters of concern, and I'm very sure people in our government are looking at it and taking appropriate actions on that. Sir, my last question to you. In a nutshell, we can say that big terror conspiracy has been unearthed and a big attack has been stopped. We have seen tons and tons of explosives recovered from several parts of it. Transcends several states. So it's a very concerning picture. So do you think now that India should, there's a time to change our strategy of national security? We have to hit the ecosystem which is working. No terrorism can survive without the ecosystem supporting it. The local support is a must for any terrorism to survive in any country. Now, talking about this particular module and the type of recoveries which have happened, almost 2,900 kgs of explosive, 20 detonators, 24 remote control units which have been seized. Now, which has still not been seized and are still lurking around in the environment is anyone's guess. So this material only, those 20 detonators only, along with the 24 remote control units and 2,900 kgs of explosive, it had the capability of making 20 separate bombs of 150 kgs of explosive each. My God. Those could be detonated either simultaneously at the similar close by places, or pan-India, as you said, it spreads over states. So 20 bombs minimum, because 20 detonators were there. 24 remote control units were there. So 20 separate bombs of 150 kgs each was the capability only of this seizure.
And if something which is still in the environment, which is still on the field, which is still not seized, you can imagine the type of, catastrophic impact it would have had if it was blasted in the multi-cities or number of cities. In population centers, we are a crowded country. So it's just very, very good action by the security forces, alert Jammu and Kashmir police, intelligence agencies. But I have an issue here. The local police on the morning of 10th, they, I think, took a wrong decision of going to the media too early. When all the people involved were still not apprehended, the complete recoveries were still not seized, like this car in question with that much of explosive was still not seized. This terrorist Umar, who ultimately blew himself up, was still not arrested. So giving out details and names of the people arrested and the recoveries made alerted these people who are still outside the net. And sir, how do you look at a university, Al Falah University, becoming the ground zero of hotbed of terror this activities? Al Falah University, now we are getting the details of the funding which it is getting from outside in crores, the type of claims it is making about its recognition or its accreditations. Now, if after this incident it is coming to light and people are not talking about it, I would like to question the people who are supposed to check this even beforehand. How come they were allowed to, do all these nefarious activities without anyone noticing it? The people who are supposed to carry out these checks and balances are the real culprits. They are the ones who have to be taken in and asked as to why they allowed these things to happen. They are the part of ecosystem. They are the part of the white collar ecosystem. अगर आज हमें पता लग रहा है कि 25 साल पुराना उनके ऊपर कोई इकोनॉमिक ऑफेंसेस का केस है, तो why no one took action against them? अगर आज पता लग रहा है कि इतने करोड़ों रुपए आए उनके अकाउंट में, so why no action was taken? अगर आज पता लग रहा है कि उनके पास तो वो accreditation ही नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट की, सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट की है, फीस ले रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की ग्रांट्स के हिसाब से, but then why this was allowed to go unnoticed? Those people must be taken to task. जो ये लोग हैं जो ये हैं आस्तीन के सांप, जो कुछ पैसों के लिए, कुछ करप्शन के लिए, कुछ फेवर्स के लिए, who are allowing these anti-national activities, which is claiming lives of innocent Indians. They should be charged with, conspiracy of murder. That is very important. Unless we do this, there will be many more people who will allow this to go unnoticed. Thank you, sir. Thank you for speaking to us in great detail. We will love to join you again sometime. Thank you so much, sir, like always. Thank you, Naveen ji, and namaskar or Jai Hind. Yeah. Thank you.